Bismillahirrahmanirrahim. Today lecture is about linear differential equation with variable coefficients. Before that, we have learned that how to solve a linear equation with having having constant coefficients. Now this time, the coefficients are variable. Such type of equations, one of such type of equation is called the Cauchy Euler equation. Cauchy Euler equation basically looks like as given in 1 ax square d square y by dx square plus bx dy by dx plus cy equal to f of x. This is basically, if you look over this one, this equation is of second order equation. The index of x and the order of the derivative is same in that. So index of the x and order of the derivative is same. Now just look to this equation. This is basically Cauchy Euler equation. इस इक्वेशन में यही देखें आप थोड़ा सा कि जो कोफिशिएंट है उसका जो इंडेक्स है, जो पावर है और डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इस तरीके से सेकंड टर्म में देखें तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, तो ये इस तरह की इक्वेशन को कहा जाएगा द कॉची ऑयलर इक्वेशन. नाउ to transform one to a linear differential equation with constant coefficient, what we need to do, we need to substitute x is equal to exponential t. X here is independent variable, so you are going to replace x with exponential t. Now please yeah, what's the problem Wajid Shah with you? Let me continue it, then if you have a doubt in your mind then you can ask at the end. Okay, now coming to the point, we have here now this is basically how we are going to solve this equation. This is the linear differential equation with variable coefficients. Now we are going to change it to a linear differential equation with constant coefficients. So we change it by substitution. And what is that substitution? We are going to replace the independent variable x by a new function exponential t. Or you may also say that if you take log on both sides, the natural log, it will become t is equal to natural log of x, or t is equal to ln x. So take differentiation with respect to x, so it will become dt by dx is equal to 1 over x. Now so how will dy by dx look like? Use this chain rule, dy by dt times dt by dx. Since dt by dx gives you 1 over x, so it will become 1 over x dy by dt. Similarly, x dy by dx will become dy by dt, because I have multiplied x to the left side, so it will become x dy by dx. So x dy by dx will become dy by dt, and this dy by dt will now I will represent it with delta y, where delta is similar to that d by dt. Previously हमने ये किया था कि कैपिटल D को d by dx कहते थे, यहाँ पे डेल्टा को हम d by dt से रिप्रेजेंट करेंगे. सो x dy by dx को डेल्टा y हो गया से रिप्रेजेंट करेंगे. इन द सेम मैनर इफ यू कंटिन्यू, x स्क्वायर आखिर में आ जाए, पेज के आखिर में, x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर विल लुक्स लाइक डेल्टा टाइम्स डेल्टा माइनस 1 y. तो ये ऑर्डर अगर बढ़ता जाएगा तो आप इसी हिसाब से आगे इसको इस ऑपरेटर को इस तरह फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. इन जनरल, सेकंड पेज पे आ जाए. In general, for the nth order Cauchy equation, we can show that x raised to power n dny by dxn is equal to delta times delta minus 1 into delta minus 2 and so on. चलते जाएं, delta minus n minus 1. ये एक बात ज़हन में याद रखें
कि जो पावर यहाँ पे होगी, ऑर्डर जो यहाँ पे होगा n, तो आखिर में जो फैक्टर्स बनेगा वो डेल माइनस n माइनस वन बनेगा। प्रीवियसली आपने देखा कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, तो उसका बना डेल्टा टाइम्स डेल्टा माइनस वन बना, क्योंकि वहां पे 2 है तो आखिर में 1 आ गया। इस तरीके से एक्स डी वाई बाई डी एक्स का बना सिर्फ डेल्टा वाई। ठीक है, सो डेल्टा वाई डेल्टा डेल्टा माइनस वन टाइम्स वाई, और सेकंड पेज पे आ जाएं तो उसमें देखें एक्स रेस्ट टू पावर एन डी एन वाई बाई डी एक्स एन को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है जो शो हुआ है। अब जरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो आपको समझ आएगा। एग्जांपल 1, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स। So what we are going to suppose, since the coefficients in this differential equation are variable, so we are going to substitute x by exponential t, so that t is equal to natural log of x. Now already we know the operator, the d by dt we represent by delta. So how we are going to write x square d square y by dx square will be delta times delta minus 1y, and the second term minus 2y is as it is minus 2y. On the right side it will become equal to, it is x square. Since we have substituted x by exponential t, so x square will be substituted by e raised to power 2t. Similarly, 1 over x is basically x raised to power minus 1. 1 over x is basically x raised to power minus 1. So x raised to power minus 1 substitution will be e raised to power minus t. So on the right side you can see that e raised to power 2t plus e raised to power minus t. और बाकी तरीका वही है, just take the operator inside and take the dependent variable y common. It will looks like delta square minus delta minus 2 times y is equal to e raised to power 2t plus e raised to power minus t. So you make a characteristic equation. You already learned it with the in this form as auxiliary equation previously. So the characteristic equation is delta square minus del minus 2 equal to 0. You factorize and you get delta minus 2, delta plus 1 equal to 0, and you get delta is equal to 2 and delta is equal to minus 1. So make a complementary function since the roots are different. When the roots are different, so you write the complementary function as c1 e raised to power 2t plus c2 e raised to power minus t. Now coming to the point of particular integral, this is the solution of complementary function. We are done with the complementary function. Now we will be doing with the particular integral. We are going to deal with the particular integral? We are going to write 1 over f of d. Now here is f of d, instead of f of d, here it is f of delta. So 1 over f of delta, on the right side f of x. So I'm writing particular integral is 1 over delta square minus del minus 2 e raised to power 2t, plus second term is 1 over delta square minus del minus 2 e raised to power minus t. Now the procedure is the same. Since it is exponential function, so you are going to replace delta by 2. You are going to replace delta by 2. As previously you have done, you are replacing d by a in exponential function. Here you are going to replace delta by 2. So when you are going to replace delta by 2, what happens? Look, 2 square minus 2 minus 2. मुबीन क्या आता है इससे? 4 minus 2 minus 2, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म में? सर एक मिनट मैं जरा उसको करता हूँ जी। ये 2 स्क्वायर माइनस 2 से क्या आता है डिनोमिनेटर में? अगर सर 0 आता है सर, 0 आता है तो ये फेलियर केस हो जाएगा। यस सर, ये फर्स्ट टर्म वाला क्या हो जाएगा? फेलियर केस। इस तरीके से सेकंड टर्म का मुझे कौन बताएगा? वाजिद आप बताइएगा। सेकंड टर्म में देखिए डेल्टा को अगर मैं -1 से रिप्लेस करूं तो क्या आता है? सर ये भी फेलियर केस बनेगा। फेलियर सर बनेगा सर। यार ये -1 का स्क्वायर +1 हो गया और फिर माइनस टाइम -1 +1 हो गया, तो +1 2 हो गया, तो 2 - 2 0 हो गया। ये भी फेलियर केस है, ठीक है ना? yes, तो यहाँ पे वो फेलियर वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट केस में हम करते थे कि x टाइम 1 ओवर डेरिवेटिव ऑफ द अदर फैक्टर ना, और yes, ये करते थे ना। अब यहाँ पे चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है ना, तो हम न्यूमरेटर में क्या लगाएंगे? t लगाएंगे। समझ में आई बात? So we are going to replace the delta by 2 in that factor which is non-zero. So 2 plus delta plus 1 की जगह पे हम 2 plus 1 लिख देंगे। And for the other factor we are writing d by d delta of delta minus 2. Similarly, you do the same with the second term. T times 1 over -1 - 2
डी बाई डी डेल्टा ऑफ डेल्टा प्लस 1। ये करने के बाद आपके पास सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ जाएगा, t into 1 over 3 into 1 e raised to power 2t minus 1 over 3 into t e raised to power minus t. So particular integral will become 1 over 3 times t e raised to power 2t minus 1 over 3 times t e raised to power minus t. So अब देखें ये सोल्यूशन हमारे पास इन टर्म्स ऑफ t आया। असल में हमने सब्स्टिट्यूशन किया था कि x इज इक्वल टू e raised to power t लिखा था, तो t की जगह पे असल में log x दोबारा लिखना है आपने। तो जहां पे t की जगह पे log x लिखना है और इस तरीके से e raised to power 2t ये सब्स्टिट्यूट कर लें दोबारा, क्योंकि x इज e raised to power t है ना, तो x स्क्वायर आपके पास बन जाएगा e raised to power 2t। दोबारा सब्स्टिट्यूशन कर दें इस सोल्यूशन में, c1 e raised to power 2t में यह जगह c1 x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस c2 बाय x आ जाएगा प्लस 1 over 3 x स्क्वायर log x माइनस 1 over 3 x log x। सो दैट्स वी आर डन विद द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं होपफुली, क्या ख्याल है जी? एनी क्वेश्चन? सर ये जो आपने शुरू में क्वेश्चन समझाया ना सर, ये जहाँ पर ये क्वेश्चन जहाँ पर है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, सर यहाँ से जरा ये शुरू का स्टेप जरा समझा दे सर, इसकी मुझे समझ क्या नहीं क्या है ना। कौन सा? ये स्टार्टिंग में जो स्टेप्स है सर, पहले जो अच्छा लेट एक्स ये वाला सर। हाँ लेट, अच्छा वो क्वेश्चन के अंदर की बात कर रहे हैं ना? ये सर क्वेश्चन के अंदर की है। हाँ जी। आपने देखें ये कोफिशिएंट्स में क्या वेरिएबल है कि नहीं है कोफिशिएंट इस डिफरेंशियल यस इक्वेशन सर, के? यस सर। तो वेरिएबल को हमने कांस्टेंट में चेंज करना है। वेरिएबल को किस में चेंज करना है? कांस्टेंट में सर। कांस्टेंट में चेंज करना है। और सबसे पहले ये समझ लें कि ये एक्स स्क्वायर है तो डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर है, बी स्क्वायर है। अगर एक्स आएगा जहां पे कोफिशिएंट तो उसके साथ डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट ऑर्डर, ये समझ लें। इस सही तरह है की सर। इक्वेशन काची ऑयलर इक्वेशन कहलाती है। समझ में आई बात? यस सर, यस सर। तो आपने देखिए एक्स को रिप्लेस करना है सर अगर एक्सपोनेंशियल टी से, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है पावर भी इसका। सेम और ऑर्डर भी सेम, बिल्कुल, पावर और ऑर्डर सेम हो तो उसे काशी ऑयलर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है सर। सही है ना? तो अब जब यस सर। काशी ऑयलर इक्वेशन आ गई तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है ई रेज टू पावर टी से। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी में है ना तो आप फिर ई रेज टू पावर एक्स से सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब डिफरेंट वेरिएबल यूज कर लेना। मुबीन क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। आप एक्स की जगह पे ई रेज टू पावर टी डालना है ना, यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। अगर यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी हुआ तो आपने ई रेज टू पावर एक्स से सब्स्टिट्यूट करना है पहले, ठीक है। तो देखें यस लॉग ले लें तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी, तो लॉग ले लें दोनों साइड पे, तो log ऑफ x इज इक्वल टू ई, log ऑफ x इज इक्वल टू टी बन जाएगा ना, यस सर, यस क्योंकि टी log ऑफ ई 1 के बराबर है ना, नेचुरल लॉग है ना। यस सर, यस सर। हाँ तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप टी इज इक्वल टू log x लिख सकते हैं। फिर आप मैंने इस तरह एक्सप्लेन किया था कि डी बाई डी टी को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे ना। यस सर, आपने कहा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा टाइम्स डेल्टा माइनस 1 वाई। ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है सही क्योंकि सही। ये मैं जनरल प्रोसीजर में समझा चुका हूँ ना कि ये कैसे आते हैं, यस सर। ठीक। और फिर माइनस 2y तो ये बन जाएगा, और फिर राइट साइड क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर है ना। यस सर। तो एक्स की वैल्यू ई रेज टू पावर टी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ई रेज टू पावर 2। ई पावर 2t। यस सर। हाँ अगर और 1 ओवर x है तो 1 ओवर x को हम x रेज टू पावर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। यस सर, मैं समझ तो ये ई रेज टू पावर माइनस टी हो जाएगा, तो राइट साइड में आ जाएगा ई रेज टू पावर 2t प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी। समझ गए कि नहीं? यस सर, यस सर, अब आ गई सर, हो गई। और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं जरा।